Hello everyone and welcome to our channel Vikas Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 22nd December 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. आज की हमारी फर्स्ट न्यूज़ है सिडबी जिसने पार्टनरशिप की है विद M1 एक्सचेंज. So the principal financial institution, that is Small Industries Development Bank of India, that is SIDBI, engaged in the promotion, financing and development of MSMEs. So, it has been partnered with M1 Exchange as the financier to bring liquidity to MSMEs at competitive interest rates. So, ये जो M1 Exchange है, it is one of the 3 trades platforms that is regulated by RBI and offers early liquidity to MSMEs within 24 hours through its online bidding platform and enables discounting of bills of MSMEs and overall improvement in functioning of MSMEs. So now move on to the next news. आज की हमारी सेकेंड न्यूज़ है न्यूली अपॉइंटेड CEO of 2032 ओलंपिक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी. So Cindy Hook, जो कि है अमेरिकन एग्जीक्यूटिव, has been appointed as the inaugural CEO of the organizing committee for the 2032 Olympic and Paralympic Games in Brisbane. So ये जो Cindy Hook है has been appointed after engaging with 50 candidates over 6 months. So ये Cindy Hook पहले Deloitte Asia Pacific के भी CEO रह चुके हैं until June and had previously worked for International Professional Services Network in multiple countries in 2015. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है न्यूली अपॉइंटेड फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. So a Dean Faculty of Arts and Science in Harvard University declared Claudine Gay as its new president, the first African American to hold this post. So ये जो क्लॉडिन गे है graduated from Stanford and then earned her PhD in government and at Harvard in 1998, also won the Tobin Prize. So ये Haitian immigrants की daughter है and is the second woman to be elected to head the school in Cambridge, Massachusetts. So Claudine Gay जो है ये टेक ओवर करेगी एज द यूनिवर्सिटी 30th प्रेसिडेंट नेक्स्ट ईयर जुलाई में. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी पॉलिसी जो कि लॉन्च की है RGICL, दैट इज़ रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने. सो ये जो रिलायंस हेल्थ इन्फिनिटी पॉलिसी है ये है प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो कि अनाउंस किया है RGICL ने. सो इसका एम है to offer limitless benefits with high sum insured up to rupees 5 crore that includes features like more global cover, maturity cover, OPD cover, unlimited restoration of sum assured and 15 plus useful add-on benefits by offering India's first credit score, best discount and BMI best discount on the premium. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. Newly appointed first chancellor of Gati Shakti University. So, हमारी जो इंडियन प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने अपॉइंटमेंट की है अश्विनी वैष्णव की. सो ये है फर्स्ट चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय विज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय जो कि है वडोदरा में. इसके अलावा जो डॉक्टर मनोज चौधरी है हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ गति शक्ति यूनिवर्सिटी वडोदरा फॉर अ टेन्योर ऑफ 5 years और इनकी भी अपॉइंटमेंट की है प्रेसिडेंट ने. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ में है ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू गेट A grade by NAAC, दैट इज़ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल. सो ये जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर बेस्ड has got A grade by scoring 3.85 points. With this achievement,
it has become the only university in India to get this much score, while Tata Institute of Social Sciences has become the only other education institution with a higher grade of 3.89 in the country. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स GFSI 2022. सो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये शो करता है कि ग्लोबल फूड इन्वायरमेंट डिक्लाइन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी फॉर consecutively third year. So in order to become the most food secure country in Africa, South Africa overtook ट्यूनीशिया, मतलब साउथ अफ्रीका की है रैंक फर्स्ट एंड सेकंड रैंक पर है ट्यूनीशिया, और इसी के साथ इंडिया की रैंकिंग है 68, बल्कि अल्जीरिया का स्कोर है 58.9 और चाइना की रैंकिंग है 25th विद अ स्कोर ऑफ 74.2 और 2021 में इंडिया की रैंकिंग थी 71st इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स. तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़. India ranked third globally in the publication of scientific papers. So according to the sources of Jitendra Singh, जो कि इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये मिनिस्टर है, सो इन्होंने जो रिपोर्ट दी है बाय अमेरिकाज नेशनल साइंस फाउंडेशन, इंडिया had jumped from 7th to 3rd in global scientific publications and scholarly output. Also, India secured third rank globally in the number of PhDs produced annually. So in the last 4 years, the number of patents granted by India Patents Office to Indian scientists has more than doubled. मतलब ये जो patents है ये डबल हो चुकी है. इसके अलावा चाइना टॉप द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइंटिफिक पेपर्स फॉलोड बाय यूएसए. मतलब चाइना की है फर्स्ट रैंकिंग एंड यूएसए इज ऑन द सेकेंड रैंक. तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है इनॉग्रेशन ऑफ 3-day लॉन्ग म्यूजिक आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल. सो कल्चर मिनिस्ट्री ने ये 3-day लॉन्ग म्यूजिक आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल जिसका नाम है स्वर धरोहर, जो कि इसका इनॉग्रेशन किया है अंडर कलंजली. सो इसका एम है टू शोकेस आइकॉनिक आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द कंट्री एंड टू फैसिलिटेट द अपकमिंग लोकल आर्टिस्ट टू परफॉर्म विद रिनोन्ड आर्टिस्ट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. और ये जो फेस्टिवल है स्वर धरोहर विल कंटिन्यू टिल 4th of this month एट सेंट्रल विस्टा, जो कि न्यू दिल्ली में है. और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है newly appointed head of AERB, that is Atomic Energy Regulatory Board. So according to an order issued from the Department of Personnel and Training, that is DOPT, Dinesh Kumar Shukla, who is a former executive director of AERB, has been appointed to the post of chairman of the Atomic Energy Regulatory Board by the Appointments Committee of the Cabinet, that is ACC. So after completion of the 25th batch of BARC ट्रेनिंग स्कूल, ये जो दिनेश कुमार शुक्ला है इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ज्वाइन किया है. तो ये थे आज के हमारे 22 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.